Welcome to the Future Tech Spotlight online learning platform. Well-known keyword, right? Firebase database, that is Google database, and this is unstructured database. Always store data in the form of XML. Okay, so that way we are having different type of platform for different type of database. Okay, as we have already discussed that some different types of models are there with the NoSQL, and based on that this NoSQL is having some category like key value based database, graph database, document oriented database, and column family database. So these are the four different category for NoSQL database. In key value pair database, we are having database like they can store data in the key value pair, just like in the map reduce we are storing the data. So this Redis, React, and other than this, Oracle NoSQL is also based on key value pair. Okay, another database is graph database, that is Neo4j and GraphDB. Now these are the two databases which will give you a graphical representation of your given data. And then after a document oriented database, so if we are talking about real world corporate field, then we are having very big data to handle, and the data which are very big, it is not possible to handle that data in the form of like structured rdbms format, like, okay, because in this structured rdbms format we required, there are so many joins, dependency, foreign key. Okay, so these are the things in between, and that's why the process will get delayed. Okay, and that the MongoDB is the solution for this, because this MongoDB and CouchDB, Relax, these are the two databases which are based on web document. So whatever the data we will store, it is always in the form of document. Okay, so we can easily say that this MongoDB will support, you can say, structured and semi-structured database and unstructured database also. Apart from that, another type of NoSQL database, that is column family database. The examples are HBase and Cassandra. HBase is already there in Cloudera. Okay, here we can use dynamic column is possible. Now, up till now, what happened, if we are having database, then only we can create table. If we are having table, then only we can create row. Now, in this NoSQL, we are eliminating these rules. Okay, so if you are not having database, okay, and you are using that database, then automatically that database will be get created. If you are not having any table and you are using that table and inserting some rows, okay, but the database is the table is not there earlier, then also the table will be created. So that is what the thing in the NoSQL. Okay, so अगर हम डेटाबेस को कंपेयर करने आते हैं, तो स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस के वाइज एंड डेप्थ ऑफ फंक्शनलिटी, सो फंक्शनलिटी सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे मिलेगी? फंक्शनलिटी RDBMS में. Okay, and then after few functionality with MongoDB and key value. But if you are talking about performance and scalability, then the performance, the RDBMS database is not at all scalable. Okay, we required to change the whole structure of the you can say database for scalability. Okay, but here we will get more scalability than RDBMS, and in key valued database we are getting the highest scalability. Okay, and of course the performance. So this is what the comparison of the database. Now, what is MongoDB, and why we require to use MongoDB in today's world? Okay, so as we have already discussed, this is a scalable, high performance database, open source, you can say some extent, document oriented database, basically built for performance speed, rich document based queries you can easily fire, and you will get the data based on some just like our SQL query. In SQL, we are having select star or select columns. The same way we are having different type of query in the MongoDB environment. Full index support is also given for high performance, because whatever the document we are inserting, each and every document is having some unique ID.
and based on that we can get the default index, but we can create index on any of the field. Then replication and failover for high availability, because just we have seen in our Hadoop environment, there are so many replication in data nodes. The same way here also replications are there. So if स्केलेबिलिटी मीन्स अगर आपको आपका अगर छोटा एप्लीकेशन है उसको बड़े लेवल पे देखना है, जनरलाइज लेवल पे देखना है, ठीक है, तो जनरलाइज लेवल पे देखने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमें स्पेसिफिक टीएमएस सीडीआर कॉलेज के लिए कोई एप्लीकेशन बनाना है एंड यू थिंक अबाउट द एप्लीकेशन फॉर द जनरल कॉलेज लेवल, तो डेटाबेस आपका पूरा डिफरेंट हो जाएगा. तो यहाँ पे स्केलेबिलिटी चाहिए, जनरलाइज करना है डेटाबेस को, तो उस टाइम पे आपको पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा. पर यहाँ पे वो नहीं होगा, क्योंकि द डिपेंडेंसी विच वी आर हैविंग विद द आरडीबीएमएस नॉट देयर विद द मोंगोडीबी. ओके, सो दैट वी विल सी लेटर ऑन, तो आपको और समझ में आएगा. सो अवेलेबिलिटी मीन्स अगर एक जगह पे आपका डेटा क्रैश हो जाता है या अवेलेबल नहीं है, देन ऑल्सो वी आर हैविंग data with us because of the replication. But this is possible if we are using on a cluster. We are using cluster for the database. But अगर हम offline local PC पे काम कर रहे हैं तो हमें ये नहीं मिलेगा. ठीक है. Auto sharding for easy scalability. तो partitions, sharding means partitions are available. Auto partitions are available over here. ठीक है, तो उसकी वजह से आपका और स्केलेबिलिटी इजीली बढ़ सकता है. देन मैप रिड्यूस फॉर एग्रीगेशन. सो द सेम मैप रिड्यूस प्रोसीजर वी कैन यूज विद द मोंगोडीबी आल्सो फॉर एग्रीगेशन. एग्रीगेशन पार्ट हम मैप और रिड्यूस दोनों में से कहाँ पे कर रहे थे? रिड्यूस. वेरी गुड शैफुला, आकांक्षा, निशा. So reduce is always for the aggregation. Will give the less number of data whatever we have inserted earlier, and a map is for key value based mapping. Okay, so why we use MongoDB? तो SQL was invented in 70s to store the data. तो तब तक हम लोग structured data पे ही काम कर रहे थे एकदम. और उसके बाद ये आया कि भाई nowadays we are having all the languages are in the object oriented format. Okay, if nowadays if you see each and every languages are having object oriented approach, you can say. Okay, so now it is easy to store data as a object directly. Okay, and that's why MongoDB जो database है वो भी क्या करता है, डेटा डॉक्यूमेंट या ऑब्जेक्ट के बेस पे डेटा स्टोर करता है. ठीक है. So what benefit we will get if we use MongoDB? So it's a replacement of RDBMS for web application. So as web application, we are having front end and back end both. So in if we are using in front end, we are using .NET or Java or any type of front end language. In back end, we can replace this RDBMS, Oracle, or any type of structured database with MongoDB database. Okay, semi-structured content management. Content management always having some type of semi-structured database like email. So email is having structured and unstructured both, because if we are talking about email, then we are having some fields. Fields like what? Field like we are having to, from, subject, and then that message body. Now this message body is having some unstructured data. So that's why we can say that it is a content management is always a kind of a semi-structured domain. Then real-time analytics and high-speed logging is available with the MongoDB, as we have already discussed. Because of this only we have used, we are moving towards a NoSQL. Then caching and high scalability. Caching and high scalability is again depending on your infrastructure. Okay, कि क्या infrastructure आपके पास है, उसके बेस पे कैशिंग और फैसिलिटी मिलेगी आपको. बट कंपेयर टू अदर RDBMS प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको इतना मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि इतना डेटा जो है, इतने जॉइंट्स या फिर जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में जो सारी चीजें होती हैं वो सब यहाँ पे नहीं होगा. ठीक है. बट इफ योर एप्लीकेशन इज हाईली ट्रांजेक्शनल एप्लीकेशन,
जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, उस टाइम पे यू कैन नॉट यूज नो एसक्यूएल, ठीक है। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बैंकिंग डोमेन, ओके, सो बैंकिंग डोमेन में नो एसक्यूएल हम लोग यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे आपके पास हाई ट्रांजेक्शनल एप्लीकेशन है जो फ्रिक्वेंटली, या शेयर मार्केट की अगर कोई एप्लीकेशन है तो वहां पे आपको सीधा सीधा फील्ड का डेटा चाहिए, ठीक है, और वो लेने के लिए, ये बहुत ज्यादा चेंजेस है उसके अंदर, ठीक है। देन प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग एसक्यूएल, जहां पे भी एसक्यूएल रिक्वायर्ड है वहां पे यू कैन नॉट यूज मोंगोडीबी, ठीक है। जहां पे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज से डेटा एक्सेस करना है, तो वहां पे वो जो है वो नहीं है अवेलेबल। ये चार टाइप हमने ऑलरेडी देखा, डॉक्यूमेंट डेटाबेस, की वैल्यू डेटाबेस, वाइड कॉलम स्टोर एंड ग्राफ डेटाबेस। सो दिस आर द फोर यू कैन से टाइप ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस, और उसमें से हम लोग देखने वाले हैं डॉक्यूमेंट डेटाबेस, दैट इज MongoDB. Okay, they store data in document similar to JSON object. सब लोगों ने जेसन, मेरे ख्याल से जेसन जेसन से सब लोग familiar होंगे, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, okay. Nowadays all the data transaction, most of the data transaction we perform through JSON. अगर हम कोई डेटाबेस से रीड राइट भी कर रहे हैं, डेटाबेस रीडिंग राइटिंग जो प्रोसेसेस है वो भी जेसन से हो रही है। इवन आप कोई स्टोर कर रहे हो डेटा, लेट्स से फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, और फ्रंट एंड एप्लीकेशन में हम लोग कुछ फॉर्म यूजर्स से फिल करवा रहे हैं, और वो फॉर्म का डेटा अगर हमें सर्वर पे स्टोर करना है, तो देर आर सो मैनी डिफरेंट प्रोसेसेस, तो वो प्रोसेस भी हम जेसन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर उससे कर रहे हैं, और अगर हमारा डेटाबेस जो है वो मोंगोडीबी डेटाबेस है, देन इट विल बी अ काइंड ऑफ अ गुड मैच के हम अच्छी एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। Now, document code. So how this MongoDB structure is different from RDBMS. So we all know regarding this relational database management system, which is a strongly structured database, a structured environment where we are having different type of database under one database, different number of tables and views. Under table and view, we are having a number of rows and columns. Okay, on rows, sorry, on column, we can apply index, and between table we can apply join or foreign key, and of course in one table we can use partition also. So this is what a structure of relational database management system. But if we talk about the MongoDB, the structure is also there, but with a different viewpoint. Okay, so यहाँ पे जैसे डेटाबेस RDBMS में जैसे डेटाबेस है, वैसे ही MongoDB में भी डेटाबेस है। यहाँ पे जैसे टेबल और व्यू है, तो यहाँ पे वो कलेक्शन के फॉर्म में है। When in the one table we are having number of rows, where in MongoDB we are having number of documents. Okay, here we are having column, but here we are having fields. यहाँ पे भी दोनों में इंडेक्स है। यहाँ ज्वाइन ऑपरेशन है, ज्वाइन ऑपरेशन ऑलवेज बी परफॉर्म बिटवीन द टू, you can say between two tables, where we required a common column to join this two table, and here we are having embedded documents. Okay, इसका हम देख रहे हैं अभी embedded document कैसे होगा। And then after यहाँ पे जैसे foreign key है, वैसे यहाँ पे we can use reference। यहाँ जैसे partition है, we are having shared process, so shared technique से we can divide the whole document into number of documents. So the same way we can handle our MongoDB also, as we are handling with RDBMS, but of course the structure and you can say syntax are different. Okay. So एक छोटा सा यहाँ पे कोई एग्जांपल है, तो यहाँ पे है db.user.find1. तो db is your database, user is your db user is your table, and then find one, तो टेबल में से हम कुछ फाइंड कर रहे हैं, तो दिस इज सिलेक्ट क्वेरी, वन टाइप ऑफ सिलेक्ट क्वेरी।
जहां पे ये टेबल में हमें क्या फाइंड करना है, एज इज इक्वल टू 39। ओके, जब हम ये वाला सिंटैक्स देते हैं तो ये आपका आउटपुट आता है। सो दिस इज व्हाट द आउटपुट इज, and here we are having this id. Each and every row is in the form of document, and each and every document is having one unique id, that is also called object id. We can also access document using object id. Okay, and these are all left hand side all columns are there, or you can say field, and right hand side values are there. Now in this interest field we are having multiple fields, or you can say embedded data. And in favorites also we are having multiple fields, or you can say embedded data. Okay, so this way we will see, this is just a glimpse, but this way we can store the data. The main operation we can perform on this MongoDB are this CRUD operation. CRUD is nothing but create, read, update, and delete. Okay, now what we can create over here? So we can create a collection. तो हम सबसे पहले तो हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसके बाद कलेक्शन क्रिएट करेंगे। डेटाबेस के अंदर कलेक्शन का मतलब होता है टेबल, और फिर टेबल के अंदर हमें क्या डालना है, इंसर्ट डॉक्यूमेंट। तो इंसर्ट कमांड, जैसे एसक्यूएल में इंसर्ट कमांड है वैसे यहाँ पे इंसर्ट है, सेव कमांड, अपडेट कमांड, रीड करने के लिए ऑल द फाइंड कमांड, देन अपडेट कमांड इज देयर, ठीक है, एंड डिलीट कमांड। ठीक है, सो डिलीट करने के लिए, रिमूव करने, ये अपडेट कमांड यहाँ पे आएगा, ये एक कॉपी पेस्ट हो गया है। ठीक है, तो ये सारे जो कमांड है वो हम यूज कर सकते हैं फॉर ऑल द, यू कैन से, डीएमएल ऑपरेशन। ओके, एंड डीडीएल ऑपरेशन के लिए है क्रिएट कलेक्शंस एंड क्रिएट टेबल। ठीक है, तो वो क्रिएट टेबल कमांड जो है वो यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन है। हम सारा परफॉर्म करेंगे तो आपको समझ में आएगा। दिस इज was just a glimpse, you can say. Okay, db dot user, तो user is the table name, db dot table name dot insert, तो insert कमांड हम कर रहे हैं, तो मतलब ये टेबल के अंदर ये डेटा इंसर्ट हो रहा है, और वो टेबल के अंदर ये 3 फील्ड है जिसमें ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। But if your table is not there, then automatically that MongoDB will create this table under the database which is currently in use. Okay, so that is there. Then if you want to find anything, तो अगर आपको कुछ फाइंड करना है, तो देखो अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा था, तो फाइंड करने पे ये आउटपुट मिल रहा है, तो वो फाइंड करने पे क्या मिल रहा है आपको, द सेम डेटा बट विथ आईडी। एज आई टोल्ड यू, ईच एंड एवरी रो और row will be stored as an object, or you can say as an as a document, and each and every document is having some id. क्लियर हुआ सबको? इतना यहां तक समझ में आया? अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं सेट ऑपरेशन से, रिमूव करना है तो रिमूव, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स के क्या क्या उसमें होता है। ठीक है, some features are there with MongoDB, that document oriented storage, full index support, replication, auto spreading, query, fast in place update, and map reduce, ये हमने देखा था। सब अगर हम लोग रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं, और अगर हमें ब्लॉक के रिलेटेड कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर हमने बनाया वेयर वी आर हैविंग डिफरेंट, you can say different tables, and tables are connected with one to many relationship. This is you can say ER diagram. Okay, तो यहाँ पे एक user data है where we are having name and email address, then block data table, then block entry table, tag table, command table, तो ये सारे tables यहाँ पे हैं with, you can say, entity relationship diagram, ER diagram है one to many relationship में। ठीक है, नाउ सेम अगर हमें इसको बनाना है MongoDB के स्ट्रक्चर में, तो कैसे होगा? सो इंस्टेड ऑफ दिस different table, we are having collections like this. Okay, so this is called embedded document where we are having document inside document. So collection के अंडर में entry के अंडर में comment, so that way we can, और collection के अंडर में we are having tag also. Okay, and in user collection we are having user author collection also. So different type of collections are there in between, one inside other. That is what the structure we are having with the
मोंगोडीबी, ठीक है। तो इस तरीके से वो स्टोर होता है, और ये इस तरीके से जेसन फाइल आपको देना जो है वो रिट्राइव होगी जब भी आप डेटा को फाइंड करेंगे। जब आप स्टोर करेंगे तो उस टाइम पे इंसर्ट स्टेटमेंट होगा, बट जब आप उसको फाइंड करेंगे सिलेक्ट स्टार, तो आपको इस फॉर्म में डेटा मिलेगा, ठीक है। Thank you, everyone.